Hello everyone and welcome to yet another episode of CampusCare EdTalks. EdTalks is a platform where educators and leaders come on board and express their viewpoints related to education and society. Our topic for discussion is teacher that becomes life mentors. And to express their viewpoints on the same, we have with us Mrs. Vandana Saxena, principal of the Tribune School, Chandigarh. A very warm welcome to you, and ma'am, we are glad to have you here with us. Likewise, thank you very much for having me. Thank you, ma'am. So let's start off with the session. And the very first question that I would like to put across to you, ma'am, will be: can teachers become life mentors? Oh, that's a favorite one. I think teaching and mentorship go hand in hand. I look at life, if you see life, life is like a dark tunnel, okay? And it's lit up with the light of the candle, and the candle can come from the teacher. So, as a child is going through the tunnel that is dark, the child only needs that little bit of light to take the next step. Which, if the child is not able to see towards the end because the child is inexperienced, बच्चों को पता नहीं है कि टनल की एंड पर क्या है, तो छोटे छोटे कदम को उठाने के लिए कैंडल से जब लाइट मिलती है बच्चों को, वो सिर्फ एक टीचर ही दे सकता है. एंड इसको बोलते हैं मेंटरशिप इन वेरी सिंपल टर्म्स. If I was looking at the dictionary meaning of being a mentor, means an advisor, a trusted advisor. So teacher is trusted. बच्चों को अपने टीचर पे बहुत ट्रस्ट होता है, बल्कि कभी कभी बहुत बार ऐसा होता है, हमारे पास अक्सर पेरेंट्स आके कहते हैं कि मैम आप ये बात बोल दीजिए, या टीचर्स के थ्रू हमसे बहुत सारी बातें बच्चों को कहलाते हैं, चाहे वो बच्चा नर्सरी का है या एडोलेसेंट है या मिडिल स्कूल से आता है. तो बच्चे अपने टीचर को बहुत ट्रस्ट करते हैं, तो ट्रस्ट फैक्टर आ गया. और जहां रही एडवाइस की बात, किस कदम पे किस स्टेप को उठाने से बच्चा आगे बढ़ जाएगा, वो एक टीचर ही उनको जान सकता है. इस चीज में मैं एक चीज आपको और बताना चाहूंगी कि स्कूल के माहौल में बच्चों को जानना हमें बहुत आसान है. कभी कभी एज पेरेंट्स हम कुछ फीचर्स बच्चों के घर में नहीं समझ पाते बिकॉज वी आर सो प्रोटेक्टिव. जब ज्यादा प्रोटेक्शन और ज्यादा जहाँ पे इतना लव हो कि बच्चों को ब्रीथ करने का भी हम समय टाइम या स्पेस ना दें, तो बच्चे की ट्रू पर्सनालिटी घर में भी उभर कर नहीं आती. लेकिन स्कूल में और एक टीचर के सामने टीचर को ये अवेयरनेस होती है बच्चे की क्या स्ट्रेंथ है और क्या वीकनेस है. तो टीचर को पता है कि कितनी मदद करने की किस समय जरूरत है, और इसी को बोलते हैं मेंटरशिप. एज सिंपल एज दैट. सो टीचर से बेहतर मेंटर्स नहीं हो सकते. ये मेरा मानना है, यही मेरा एक्सपीरियंस मुझे सिखाता है और बताता है. Absolutely, ma'am. Very, very, in a very right way and a very simple way you've put it across. Ki teachers is the only, somebody who can mentor you. But, ma'am, what if, see, what I feel is it restricted to just schools? Because I have seen very few, kids who take along their school teachers or teachers to a lifelong case. So what makes a good teacher, or what makes a teacher a good mentor? Very, very, very good question. Thank you. That's a great question. अब टीचर्स तो अपनी जगह ही रहेंगे, लेकिन टीचर्स की कई बातें तो हमारे दिल और दिमाग में चलती है ना. Absolutely. और जो एक अच्छा टीचर होता है और एक बहुत मास्टर टीचर जिसको हम कहते हैं, हमारी एजुकेशन स्पेस में जगह जगह हर स्कूल में हर कॉलेज में मास्टर टीचर्स हैं. और वो मास्टर टीचर्स कौन है, आप खुद भी आंख बंद करके सोचिए. ऐसा टीचर जिसकी बात आपको कुछ ज्यादा नहीं होगा, या तो एक शब्द होगा या एक सेंटेंस होगा जो आपके दिल में और दिमाग में घर कर जाएगा, और वही आपको मेंटर करेगा. टीचर की कही हुई बातें आपको लाइफ लॉन्ग मेंटरशिप देती है. बहुत बार अक्सर ऐसा होता है कि टीचर की कही हुई बात हमें उस समय समझ नहीं आ रही होती, गुस्सा आता है, बहुत गुस्सा आता है, हाँ. लेकिन लेटर ऑन इन लाइफ एज वी प्रोग्रेस और हम लोग निकल के आए, इस समय भी अगर मैं अपनी आंखें बंद करूँ तो मुझे क्लास 8 में मेरे गुरुकुल के
आचार्य थे जिन्होंने संस्कृत के श्लोक मुझे सिखाए थे। और आप मानोगे नहीं, राइट नाउ आई एम हेडिंग द स्कूल और वेदा चैंटिंग हमारे स्कूल में होती है। कहाँ से आती? शायद वो संस्कृत टीचर जिन्होंने मुझे सिखाया था, मुझे मेंटर किया था, उनकी मेंटरशिप की बातें मुझसे जा रही हैं आगे मेरे बच्चों तक। सो इसी को बोलते हैं एक अच्छा टीचर, मास्टर टीचर वो है जो टीचर हमारे साथ नहीं जाएगा लेकिन उसकी कही हुई बातें, उसकी शिक्षा हमारे साथ, it always remains the igniting light in our lives forever and ever. Even when we become teachers ourselves, who is guiding us really? You know, whenever I'm sitting in an interview asking teachers, what is your inspiration? Very often they say, my English teacher, my maths teacher, you know. So, इसी को mentorship बोलते हैं. So basically, the imprints that is left behind once somebody is passing, life and passing, passing the exact paths. So something that, leaves behind an imprint, something in our mind and soul, that is what mentorship is all about. I guess, ma'am, that's what you're trying to tell. Yes, it's like a relay race. You Yeah. pass the baton, and Yeah. then you pass the baton, and then you pass the baton again. That is mentorship. एब्सोल्युटली सो मैम आपको क्या लगता है कि ग्रेजुएट कर लेते हैं एक इंसान या वी मूव फॉरवर्ड टुवर्ड्स लाइफ सो we keep on changing so like teachers keep on changing, mentors keep on changing, so do you think there could be a constant support a student can have, or somebody who could be can every student have a mentor, or look up to a mentor? Hmm. Because for somebody like me, you where I can understand is mentor is somebody, not everybody has one mentor, so not every teacher will be my mentor, or not everybody is flexible with that idea, because see, basically I'm an extrovert, so probably I can have a connection, but somebody who's an introvert, how can they get into those shoes? Yeah, very good question. So यहाँ पर आप you're talking about those children who are kind of left behind, जो नजर नहीं आते हैं, जो background में रहते हैं, आप उनकी बात कर रहे हैं, right? So Absolutely. now supposing let's talk in two cases. One is life in general, an introvert in life in general, and an introvert in a classroom. दो मुद्दों पे हम बात करते हैं. Now, the new education policy also, the latest theories in education talk a lot about inclusion in education. So इस चीज के ऊपर बहुत बात होती है कि हर बच्चे तक हमें उनकी तह तक पहुंचना है. अगर आप स्कूल में हैं इन पर्टिकुलर, तो टीचर तो आप तक पहुंच ही जाएगी. अगर बच्चा चुप बैठा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि बच्चे में पोटेंशियल नहीं है एक्सेस करने के लिए, या बच्चा बहुत ज्यादा बोल रहा है, उसको भी मेंटरशिप चाहिए होती है दोनों तरफ बैलेंस बनाने के लिए. तो स्कूल में तो बच्चा शायद मिस नहीं होगा, ये मेरा मानना है. ठीक है. इन लाइफ इन जनरल बहुत जरूरी है हमको बच्चों के अंदर एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी जगाना कि मुझे भी हेल्प चाहिए, है ना. यू कैन टेक अ हॉर्स टू द रिवर, बट यू कांट मेक द हॉर्स ड्रिंक वाटर टिल द टाइम द हॉर्स डजंट वांट टू ड्रिंक वाटर, राइट. सो सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर बच्चे में है कि मुझे भी ग्रो करना है, मुझे हेल्प चाहिए, है ना, मुझे इस ग्रुप से निकलना है, मुझे अपने ऊपर काम करना है, तो मेंटर्स तो हमारे सब तरफ है. घर में ही माँ तो एक मेंटर होती है ना, फर्स्ट टीचर तो मदर है, राइट. पेरेंट्स आर मेंटर्स. कभी कभी ऐसी स्थिति आती है बच्चे एडोलेसेंस हो जाते हैं तो पेरेंट्स में उनको मेंटरशिप नहीं मिलती. बच्चों को मैं यही कहूंगी, अपने पीयर ग्रुप में भी आपके मेंटर है, लेकिन आपको बुद्धि चाहिए, आप सिलेक्ट कीजिए जिससे आपका दिल मिले, जो आपको सही रहे. इस चीज की अवेयरनेस होनी जरूरी है. और फ्रॉम टाइम टू टाइम हमारे को अलग अलग एक मेंटर शायद जिंदगी नहीं हमें कटा सकते. अलग अलग टाइम पे जैसे हमारी जरूरत है उसके अनुसार मेंटर्स हमारे इर्द गिर्द आसपास ही हैं. समटाइम्स अ बुक कैन बी अ मेंटर, समटाइम्स अ टीवी सीरियल कैन बी अ मेंटर, right? Sometimes a song can be a mentor, sometimes an art piece can be a mentor. But for that, we have to be observant ourselves. Let's say the finger points back at us, one at you and three back at me. If I want mentorship, I will find it, right? But again, I would like to mention here that every school, every education institution must reach out to the silent child because they are the out of the box thinkers.
जो हर बात फटाफट बोल जाते हैं, उनकी बातें तो सुन नहीं सकते। अगर कुछ नया ढूंढना है तो हमें उनसे मेंटरशिप हमको चाहिए, जो कभी बोलते नहीं, क्या जाने उनके दिमाग में क्या खजाना भरा हुआ है। इट्स अ टू वे प्रोसेस। आई मेंटर यू, यू मेंटर मी, because in mentoring you I am also mentoring myself. It's all an interaction, a flow of energy, an exchange of energy, and that is teaching. So teaching is flow and exchange of energy, mentorship is flow and exchange of energy from higher to a source which needs to come up higher. It can be either way. Sometimes students are mentors to teachers as well. ये बहुत ही interesting topic है, and it's flowing, you know. It has all kinds of flow from one part to the other. Absolutely, ma'am. There are a lot of times, even, kids, and I mean, I would say not even kids. So people, kids with 1 2 years also say something, or picks up something, and we just learn. Oh, okay, we have to do certain things that way. So there are a lot of things. It's a two-way process. So learning never stops. If you're 40, if you're 30, or if you're 10. So initially we are just growing, we are just exploring, and with time we just have experience, and we gather a lot of experience in ourselves and understanding. That's how we exchange our thought process, and a communication happens. With this thing, ma'am, I would really want to know, can every student find a mentor in teachers? Of course, of course, you know, very interesting. It's not another thing I want to highlight over here is every teacher cannot be a mentor to every child. So select your mentor. That's why we have mentorship groups separately in schools other than the teachers who teach you. Because if a teacher is so driven, अगर क्लास 10 में टीचर आए हैं आपके पास, उनके पास सिलेबस उनको 12वीं का या 10वीं का खत्म करना है, तो वो उस धुन में लगे रहेंगे। हो सकता है कि उस बच्चे को स्पीड पे नहीं चलना है। इंडिविजुअल डिफरेंसेस और पर्सनलाइजेशन ऑफ एजुकेशन जिस ऑर्गेनाइजेशन में है, वहां मेंटरशिप मिल जाएगी। बिकॉज मेंटरशिप इज नॉट कि हमें सब्जेक्ट को पढ़ना है या कंटेंट को पढ़ना है या एकेडमिक्स को पढ़ना है, ऐसा नहीं होता। और अक्सर मैं देखती हूँ, मेरा एक्सपीरियंस है, ये जो को करिकुलर एक्टिविटीज करवाते हैं जो टीचर्स, जैसे म्यूजिक, आर्ट, योगा, कंप्यूटर, आजकल सबसे सबसे बड़े मेंटर्स आज के समय में हैं कंप्यूटर टीचर्स। आप मानोगे, they are mentoring the entire community, right? So it depends, and definitely children must remember that अगर एक टीचर से मेंटरशिप, बिकॉज मेंटरशिप में ट्रस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, यू नो। अगर आपको ट्रस्ट नहीं है तो आप, and everybody doesn't have that quality. Some teachers are, some of us are very direct. अगर मैं आपको बहुत एक डायरेक्ट फीडबैक दे दूं, आपको हो सकता है पसंद आए ना आए, हो सच तो होगा, लेकिन मैं जिस भाषा में बोलूंगी, जिस तरह से आपको कम्युनिकेट करूंगी, उसी से तो आपका ट्रस्ट गेन कर पाऊंगी। और जब तक मैंने आपका ट्रस्ट नहीं गेन कर लिया, मैं मेंटरशिप नहीं कर सकती। तो एवरी चाइल्ड कैन डेफिनेटली फाइंड अ मेंटर। द स्टेज ऑफ लाइफ कैन बी डिफरेंट, राइट, एंड द टीचर मे नॉट बी सेम फॉर ऑल। ऐसे कभी हो ही नहीं सकता कि एक ही टीचर 50 जनों की मेंटरशिप कर देगा, नहीं। मेंटरशिप होती है छोटे ग्रुप में। Absolutely, ma'am. It's just, matching your wavelength. The exact place and the exact person that you matches your wavelength is the person that you can, maybe trust, maybe, have that affirmation that, okay, if something comes out, and if something we discuss, and if something we talk about, maybe on a good note, maybe on a right note. So what I feel is, it's the wavelength, it's the connection, it's the right set of just something clicks, and then that, okay, this could be my person, wherein I can share, I can trust, I can listen, and I can imbibe to a lot of things. Because if we say, life, we meet a lot of people in our lives, but not everybody is a part of our lives. So there are people who are for a shorter span of time, and there are people who live along with us, and have a larger, I would say, shelf life with us. So it's basically how well and how quickly you connect with certain people, and how easily you are able to communicate and express, and exchange of thoughts happen.
So I feel whenever you're talking about mentoring, it's not just the age that we're talking about. It's the talking of how one can exchange the thought process, the exact thing that's running in our minds, the things that are triggering us, or things that we really want, somebody to listen to, and have a right guidance as well as the right way of, dealing the entire situation. So mentoring is not just restricted to, just imbibing and giving certain rules and regulations of how to go about certain things, but rather a complete process wherein a lot has been involved, not just few interactions or something. Am I correct, ma'am? We would like to have a concluding statement from your end as well. So I would like to, I don't know, I wouldn't conclude, of course, because mentoring is continuous, like I said. But yes, mentoring is not just about exchange of thought, it's a lot about observing. There's a lot of non-verbal communication that happens in mentoring. And if you want the best mentors, the sports teachers are excellent mentors. Excellent mentors because they not only motivate, they engage the child in team building, they give you a spirit of competition, they are able to analyze every movement of the body that you make and how can you improve it, because the master coaches, the master mentors are the people who build teams in the field of sports. So mentorship is something which is there's a lot of motivation in it, there's a lot of inspiration in it, there's a lot of role model behavior in it, there is a wavelength that must match, there is a need of the person, because at different timing we need different things, acknowledgement to the different developmental stage of the child or need in your life, the way you're placed at a particular time. Mentoring also has a lot to do with global trends. आजकल के टाइम में हर एक को एक स्पिरिचुअल गाइड चाहिए. You see, so the global trends, अब हर एक को चाहिए एक कंप्यूटर्स में कुछ ना कुछ स्किल सीखने के लिए. So global trends also kind of define, या well-being में बहुत काम हो रहा है आज के टाइम में, right? So जिस तरह कोविड था, सबको कुकिंग के लिए मेंटर चाहिए था. तो global trends also define the kind of mentors who are needed. So in चीजों की awareness के साथ, and with this belief and faith and with the message that mentors are all around us, please look for them and source one. We cannot do everything ourselves. Ask for help. Reach out for help. Reach out. Everybody is around you, loving you, taking care of you, and we can surely to work together to make the world a better place. And mentoring is a powerful tool for that. Thank you so much. Absolutely, ma'am. Thank you so much for, giving us this, brief lesson of how mentoring is not just a topic to discuss in few minutes, but an, complete, I would say a lifelong journey wherein you have to, constantly follow a path and be in constant touch with n number of people and understand how to deal with and how to reach out to people, like I said. So, with this note, I would like to have. I just want to add one last thing that's just Absolutely, on my ma'am. mind. And again, today's trend, please do not confuse mentoring and networking. They're different things. Absolutely. That's my parting shot, because it's the age of networking. Networking and mentoring is not the same. So that can be a topic some other time. Right? Absolutely, ma'am. Thank you so much, ma'am. With this note that networking is not mentoring, it's mentoring and networking are two different aspects. With this note, we would like to sign off with this session, coming up with promising and coming up with another insightful session with another educator just like hers. Thank you so much, Vandana, ma'am. It was a great pleasure, having a small conversation here. With this note, do subscribe our channel, hit the bell icon for more notifications, like, subscribe, share, whatever you will like, because we'll be coming back more with more stuff. Thank you so much and have a great evening, everyone. Thank you.